दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन IITians पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इंग्लिश 2 का जो क्विज 2 में आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है ना। क्विज 2 के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसका पूरा इंग्लिश क्विज 2 जो एक इंग्लिश 2 का जो आपका एग्जाम्स होगा उसका सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आपका वीक 5 से लेके 8 तक का कंटेंट है एंड प्लस आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया है वीक 1 से लेके वीक 4 तक का कंटेंट, तो उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम कवर क्या करेंगे, सबसे पहले हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड देखेंगे। मूड एंड मॉडल्स एंड क्वेश्चन टैग्स, पंक्चुएशन, दैट क्लॉज जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो रिमेनिंग पार्ट है, मैंने लास्ट वीडियो में जो आपका जो वीक 4 का वीडियो था, ठीक है ना, वीक 4 का मेरा मतलब है क्विज 1 का वन शॉट जो था आपका, क्विज 1 का वन शॉट में आपको मैंने क्या पढ़ाया था, आपको मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया था। उसमें 2 चीज़ मिसिंग थे, एक पन एंड एक जक्स्टा पोजीशन, ठीक है। ये 2 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इनको भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में इसका हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूड एंड मॉडल्स। मूड, मूड से मतलब क्या समझ में आता है, मूड से मतलब समझ आता है कि व्हाट डज मूड मीन। मूड का मतलब होता है आपका इमोशनल, इमोशनल ब्रेन का इमोशनल कनेक्ट कैसा है, ठीक है। ब्रेन का इमोशनल कनेक्ट मतलब आपका अभी इमोशन कैसा चल रहा है, किसी का मूड खराब होता है, सपोज अभी किसी का मूड अच्छा है, किसी का मूड खराब है, किसी का मूड हो सकता है दुखी हो रखा है, ठीक है ना, उसके मन पे डिपेंड करता है। दिस डिपेंड्स ऑन द इमोशंस ऑफ द person to person, or you can say the emotions of the individual. It is known as the mood. Modality is about non-factual things. In that sense, the that model utterance are not an emphasis on being factual. ठीक है ना। 1 मिनट मैं आपको पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। यस, या सो मोडालिटी इज अबाउट नॉन फैक्चुअल थिंग्स। मोडालिटी का मतलब क्या होता है, मूड, ठीक है। मूड को बोलते हैं मोडालिटी। इज अबाउट यहाँ क्या यूज हुआ है, यहाँ एडवर्ब यूज हुआ है, ठीक है ना, यहाँ एडवर्ब यूज हुआ है। इज अबाउट नॉन फैक्चुअल थिंग्स इन द सेंस दैट मॉडल अटरेंसेस आर नॉट एन एम्फोसिस ऑन बीइंग फैक्चुअल। तो मूड, तो मूड अब कभी सपोज आप कभी आपका मूड खराब होता है, ठीक है ना, वेन एवर योर मूड इज नॉट वेल, योर मूड इज सपोज सैड, देन अगर कोई भी एक जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, ठीक है ना, उस फैक्चुअल चीजें आपका जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा अलग प्रकार का हो सकता है, तो उसी को कहा गया है इधर मोडालिटी, ठीक है ना। मोडालिटी इन्वॉल्व्स कमेंट्स फ्रॉम स्पीकर ऑन नेसेसिटी ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबल सेंटेंसेस, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स जो पास होते हैं, पॉसिबली वाले स्टेटमेंट्स जो पास होते हैं, ठीक है, वो कौन पास करता है, वो पास करता है स्पीकर। स्पीकर मतलब जो बोलने वाला है, बोलने वाला कौन है, एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कौन है, जो आप अपना रेफरेंस लेंगे, जिसको आप रेफरेंस लेंगे, ठीक है ना। सपोज सपोज अरुण इज स्पीकिंग, ठीक है ना, तो वो एक क्या हो गया, वो एक स्पीकर हो गया। ऑक्सिलरीज आर वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मोडालिटी, ऑक्सिलरीज आर वन वे, ऑक्सिलरीज क्या होता है, ऑक्सिलरीज आर एक तरीका है, इट इज अ वे, इट इज अ वे, इट इज अ वे टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे एज ऑक्सिलरी वर्ब्स और यू कैन से एज मॉडल्स, ठीक है ना, एज मॉडल्स, ठीक है ना। चलिए, मूड, तो देखो मूड आपके 3 टाइप्स 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मूड, ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मूड। कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, सब्जंक्टिव एंड कंडीशनल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मूड, नेमली इंडिकेटिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, सब्जंक्टिव एंड कंडीशनल। नाउ आपको मैंने ग्रामर में, ठीक है ना, फ्रॉम इंग्लिश 1 टू इंग्लिश 2 टिल डेट मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए होंगे, उसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको पता होंगे यहाँ से, ठीक है ना। जैसे इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना। इंटरेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। इम्परेटिव का मतलब होता है, इम्परेटिव का मतलब होता है कमांड देना या फिर रिक्वेस्ट करना, ठीक है। ये सब जो है कॉमन वर्ड्स है, तो इन वर्ड्स का मतलब जानते रहना, ठीक है ना। चलो, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है कि मीनिंग, ठीक है ना। व्हाट डज इंडिकेटिव मीन, इंडिकेटिव मीन्स दैट स्टेट्स फैक्ट्स एंड ओपिनियंस और आस्क क्वेश्चंस। शी स्टडीज एवरी डे, डू यू लाइक कॉफी, सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट और यू कैन से क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इम्परेटिव में कमांड दिया जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करा जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है।
For example, close the door, please pass the salt. These are example of request, or you can say commands. So generally this is a command. Please pass the salt is a request and close the door is a command. Interrogative, that means the police interrogate, that means questions. ठीक है ना? Questions. Asks direct questions. Are you coming to the party? What time does the train arrive? These are the direct questions. These are known as the direct questions, or you can say as interrogative. Interrogative mode. ये जो आपका जो स्पीकर का मूड है वो क्या है? इंटरोगेटिव मोड पे है, क्वेश्चन करने का मूड पे है. ठीक है? गॉट इट? या. Subjunctive. Subjunctive means expressing of hypothetical situations, wishes or demands. Hypothetic. ठीक है? If I were you, I would take the job. I wish she were her. तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि सपोज आप अपने से रिलेट कर पाओगे ये चीज कि कभी कभार पेरेंट्स कहते हैं आपको, ठीक है ना, कभी कभार पेरेंट्स कहते हैं बेटा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज ये कर लेता. ठीक है ना? अगर कोई तुम्हारा दोस्त होता वो कहता है अगर भाई तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर लेता. तो दैट इज नोन एज सब्जंक्टिव मोड. ठीक है? दैट इज नोन एज सब्जंक्टिव. क्या? सब्जंक्टिव मूड. इसका क्या मतलब होता है? इट एक्सप्रेसेस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. गॉट इट? या. सो नाउ कंडीशनल. कंडीशनल मूड क्या होता है? कंडीशनल मूड होता है जिसमें आपको पॉसिबिलिटीज दिखती हैं. व्हाट डज पॉसिबिलिटी मीन? पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ हैपनिंग. ठीक है? और हाइपोथेटिकल आउटकम्स. इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड. इफ जो है वो प्रूव करता है कि ये आपका क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है. ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट है. शी वुड ट्रेवल मोर इफ शी हैड टाइम, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है. ये तो ऑफ कोर्स है ना यार कि अगर वो टाइम ज्यादा होगा तो फिर वो ज्यादा ट्रेवल कर सकेगी. दैट्स ऑब्वियस. ठीक है? हाइपोथेटिकल आउटकम्स. नेक्स्ट, व्हाट डज मॉडल्स मीन? तो आपने मूड समझ गए. ठीक है ना? यू हैव अंडरस्टूड मूड. व्हाट डज मूड रेफर टू? मूड refers to the emotions, or you can say the brain emotions, or you can say the heart emotions of a person, which comes out as a word, or you can say in form of statements from the individuals. Models. Models are directly linked to moods. ठीक है? लिंक्ड टू मूड. ठीक है? मूड से आया आपका मॉडल, ये ध्यान रखना. ठीक है? मूड से आपका क्या आया? आप मूड से आपका आया मॉडल्स. ठीक है? तो सी, व्हाट डज मॉडल मीन? सो सी, मॉडल वर्ब्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. तो मॉडल क्या है ये नोट कर लेना. मॉडल इज अ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है? मॉडल इज अ हेल्पिंग वर्ब. A modal verb helps the main verb to express the mood of the subject. ठीक है ना? This helps in the mood of the subject. ये क्या बोल रहा है कि ये जो है आपका mood of the subject डिसाइड करता है. mood of the subject. सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट का मतलब जो होता है स्पीकर. स्पीकर जो बोल रहा है, ठीक है ना, उसका मूड डिसाइड करता है. एंड एट द सेम टाइम it can indicate possibility, persuasions and ability or willingness. ठीक है? ये क्या एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय पे ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है ना, एबिलिटी, विलिंगनेस, विलिंगनेस एंड परसुएशन, परसुएशन आपका ये डिनोट कर सकता है. ठीक है? या. सो नेक्स्ट, कुछ मॉडल्स के टाइप होते हैं. ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं. दैट्स ऑल्सो नेसेसरी टू फॉलो. सो सी, एबिलिटी. एबिलिटी अगर हम कोई सपोज टाइप हो गया एबिलिटी. ठीक है? एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब क्या होता है बताओ. एबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज को आप कर सकते हो या नहीं, क्या आपके सक्षम में है कि नहीं वो चीज, उसे कहते हैं एबिलिटी. Ability is known as the term, or you can say a type, or you can say a word given to the suppose an activity that can be done or not by a specific person. Okay, so when ability is used, ठीक है, जब अगर टाइप एबिलिटी रहेगा तो आप कौन सा मॉडल यूज करोगे? आप यूज करोगे कैन. ठीक है? यू विल यूज कैन. शी कैन स्विम वेरी वेल. ठीक है? दिस इज एन एबिलिटी बाय अ इंडिविजुअल. यहाँ शी इज द सब्जेक्ट. शी इज द सब्जेक्ट. सो यहाँ पे शी जो है वो एक सब्जेक्ट है. तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? शी कैन स्विम वेरी वेल. सो द स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ द गर्ल और वुमन और एनी फीमेल. ओके. पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस. ओके. माइट. माइट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी. माइट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी. गॉट इट? या.
It might rain tomorrow. This is a low chance. That is a chance of probability that would it rain tomorrow? Is there a chance to rain tomorrow? And somewhat like that. Permission. Permission means that to take permission. To take permission, you can say that if you're going to the washroom and if in considering the school, if you went to the washroom, you used to take you used to take permission from the teacher whether you can go to the washroom or go for having your water. Okay. So may. For permission, you will always use may. May I leave the room? May I go to the washroom? May I go to the drink water? May I go out of the classroom? Okay. Obligations. Must. You must wear a seat belt. You must wear a seat belt. Must का मतलब क्या होता है? Must मतलब करना ही है. ठीक है? करना ही है. और in English we can say you need to do. Okay. You need to do. Okay. तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोक टोक. ठीक है. मस्ट नॉट. ठीक है. मतलब ये स्ट्रिक्टली मना होता है. ठीक है. स्ट्रिक्टली कंडीशंस में हम यूज करते हैं क्या? स्ट्रिक्टली कंडीशंस में हम यूज करते हैं मस्ट. ठीक है ना. इन द केस ऑफ स्ट्रिक्टनेस वी यूज्ड मस्ट और मस्ट नॉट. ओके. मस्ट और मस्ट नॉट. You must not smoke here. This is a prohibited area, so you don't smoke here. You can't smoke here. Willingness. Willingness का मतलब क्या होता है? Like something of you are willing, or you can say you are dreamt of, or something like that. I will help you with your homework. I will help you with the homework. Here the type of modal verb is willingness. Okay. Willingness. Great. So what is the difference between the last image and this image? Here you can see that ability, there has been used two things: can and could, permission can, could, may, advice should, obligation must, have to, and possibility might, may, could, can. So here the two types of things, one is present and the second is past. Okay. So in models, if you are using can, it should be used in present, and could, it should be used in past. Similarly, will in present. Okay. And would in past. Got it? So similar to that, we will be getting acquainted to many such modal verbs. Suppose ability can, could. David can speak three languages. David can speak three languages. He could speak fluent French when he was 5. So here it's considered a past. Okay, this is a past. Can, could, may. Can I sit that chair, please? Could I open the window? May I borrow your dictionary? Should. You should visit your dentist at least twice a year. You should try to lose weight. So should is always used. Should is always used. This is a very important model in case of advice. Okay. Obligation, must and have to. Have to is always used in the past tense. You have to take off your shoes before you get the mosque. Possibility, might, may, can, could, that has been discussed in the last slide. Okay, that has been discussed in the last slide. Got it? Yeah. So next, question tags. What does question tag mean? Question tags are short phrases added to the end of a sentence to turn it into a question or seek confirmation from the listener. So question tags are of two types. Okay, question tags are of two types. The one is positive and the second is negative. Okay, these are the two types of sentences, or you can say question tags. Okay, question tags. See, verb tense, present, past, present simple and past simple. Okay, so see, when you, this sign refers to the positive and this sign refers to the negative tag. Okay, when you're considering a question tag of negative sense, then you need to use whenever, see, जब भी आप negative tag इस्तेमाल करोगे तब आपको क्या होगा, तब आप यूज करोगे, लेट मी चेंज द कलर, तब आप यूज करोगे पॉजिटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव टैग. ओके, जब आप पॉजिटिव टैग यूज करोगे देन आप नेगेटिव सेंटेंस प्लस पॉजिटिव टैग यूज करोगे. ठीक है, गॉट इट? या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप इस पर ध्यान रखना है. इस बात पे क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टैग पे. Got it? Yeah. So see, she is American. So this is a positive sentence, and isn't she? This is a negative tag. So this becomes a negative tag, question tag statement.
Okay, you study English. This is a positive sentence, don't you? This is a negative one. You were at home, weren't you? This is a positive sentence and this is a negative one. Similarly here, in case of positive tagging, she isn't an American. This is a negative sentence and is she is a positive tone. Okay? You don't study English. This is a negative sentence and do you? This is a positive tone. Similarly here, in within all the parts of the tenses, types of tense, it has been used. Got it? Yeah. So here, model verbs, he can read this book, can't he? And he can't read the book, can he? So this is considered as the question tag. So basic theorem, or we can say the basic rule for question tag is if you are using a negative tag, then make sure the statement provided before the tag is positive, and if you are using a positive tag, make sure the statement provided before the tag is a negative one. Got it? Yeah. So let's move to the next slide. So yeah. So examples of question tag. So here some sorts of examples are given and some common mistakes, or you can say basic important rules. Basic important rules are given. So examples of question tags isn't it's a beautiful day, isn't it? So this is a tag of negative sense, okay? Negative sense, ठीक है? यहाँ positive आपने use करा, then यहाँ negative use करा आपने, ठीक है? This is a negative one. You don't like coffee, do you? So this tag is a positive one and this don't is a negative tag. Okay, she's from France and this is a positive one and this isn't she, this is a negative one. So whenever you need to identify whether a statement passed is a question tag or not, whether it follows the rule of the question tag, make sure it should consist a positive statement and a negative tag, or it should contain a negative sentence and a positive tag. Make sure positive sentence and positive tag are not applicable. They refrain the rule of the grammar. Okay. Similarly, negative sentence and negative tag also refrain the rule of the grammar. Okay. चलो examples of question tag. So examples of isn't it, don't you, won't you, can't you, haven't you, wasn't it, hasn't it, didn't it, aren't they, isn't she. So आपको ये basic चीज पता होगा कि isn't शी, इसमें इज नॉट शी, ठीक है ना, इज नॉट शी, दिस दिस रेफर्स टू नॉट. ओके, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता ही होगा. सो सी what are the common mistakes that are committed by the students. So the common mistakes you can say is there are three common mistakes that is very common. You can say using the wrong auxiliary verb. Make sure to use the correct auxiliary verb in the question tag. For example, she is going to the store. Isn't she? This is the correct one. But as I said, taking you should always have a positive. You should always have the opposite question tag according to this sentence, or you can say this statement. Got it? So doesn't she is not applicable for here. Forgetting the change of form. Remember to use the opposite form for auxiliary verbs in the question tag. For example, he can swim, can't he? So here he used a positive statement and a negative tag. That is correct. But if he had used he can swim, can he? So this would have gone wrong. So you must be thinking that before I said in the wrong auxiliary verb, I said that the opposite tags are not allowed, right? Sorry, the similar tags are not allowed. But yeah, this thing is applicable here. But what is here? Here we need to see that the verb form, okay, the auxiliary verb is not used as a wrong one. ठीक है, यहाँ हम क्या यूज करेंगे, यहाँ रॉन्ग ऑक्सिलरी वर्ब ना यूज हो वो हम चेक करेंगे. ठीक है, जैसे शी इज गोइंग टू द स्टोर, इजंट शी होगा, नॉट डजंट शी. गॉट इट? या इज एंड डज में बहुत फर्क होता है, ये ध्यान रखना. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम. Using rising intonations for positive statement. Positive statements should use following intonation question tags. For example, you like sushi, don't you? You like sushi, don't you? ठीक है. So see, ये इंटोनेशंस क्या होते हैं? इंटोनेशंस मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बता रखे हैं, जो कि क्विज 1 के लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लेक्चर है, वहां से देख लेना. इंटोनेशंस का मतलब होता है द फ्रीक्वेंसी, द पैटर्न एट विच द स्टेटमेंट इज बीइंग सेड. जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो, ठीक है ना, whenever you read a statement, how does the frequency line, how does the voice frequency line moves? Either it's moving from down to up, or it's being neutral, or it's moving from up to down. This refers to some
sort of statements that are being passed. You can go through it from the last lectures. Okay. Now, it is a very common thing, whether and if. When is whether used and when is if used? In case of choices and alternatives, always use whether, and in case of conditions, use if. Requires and or not used for yes or no choices can hint positive or negative possibilities, and if is always used in the conditions. Example, tell me whether you want to dress or a handbag. जब आपके पास choices दिए रहेंगे तब आप whether use करोगे. Whenever you're provided with the choices, you will always use whether, and if you're not provided with the choices, then you need to use if. I will go to the party only if my dress is ready. This is a condition that has been provided to you. That means the basic difference between whether and if is whether has options and if doesn't have options, and if is based on the conditionalities. Predicate. What does predicate mean? So see, a predicate is the part of a sentence or clause that describes the action, state, or condition of the subject. So predicate generally describes the condition. Okay, the condition of the subject. Got it? Of the subject. Okay, of the subject. Simple predicate, complete predicate, compound predicate. The main verb or action of the sentence is known as the simple predicates. For example, Sarah sings beautifully. And complete predicate, the verb and all words that describe the action or state is known as the complete predicate. Here see, Sarah sings beautifully in the choir. ठीक है, choir का मतलब होता है ग्रुप. ठीक है ना, choir का मतलब होता है ग्रुप. So यहाँ पूरा जो sentence है वो एक है. ठीक है, these are in one. For compound predicate, two or more sentences are verbs with the same subject are joined by the conjunction. Whenever there is a use of conjunctions, think that it is a compound predicate. You need to bring down the summary of the sentences. Okay. Sarah sings beautifully and dances gracefully. Here, two statements are being used using the same subject and a conjunction has been used. Therefore, it is a compound predicate. Got it? It is a compound predicate. First sentence, Sarah writes poetry. The subject is Sarah and writes poetry is the predicate. And this is a simple predicate, okay? The teacher explained the lesson. The teacher is the subject and explained the lesson is the predicate. So this is a complete predicate. Got it? Yeah. That clause. What does that clause mean? उससे पहले हम जानेंगे clause क्या होता है. Clause is मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया तो वहां से देखना. ठीक है, लास्ट लेक्चर में बता रखा है क्विज 1 वाले लेक्चर में. ठीक है, क्विज 1 वाले लेक्चर में बता रखा है, वहां से आप देखना. Function. So see, that clause is used in 5 senses. Okay, that clause is used in 5 categories or you can say 5 conditions. ठीक है ना, 5 conditions में use होता है. As a subject, that can be used as a subject of a sentence. That she won the match surprised everyone. So here that is used as a subject. Got it? That is used as a subject. Great. So let me change the color of the pen. Yeah. As an object, it functions as an object of a verb. I believe that he is honest. I believe that here that is used as an object. Got it? Object. After reporting verbs, used with reporting verbs like say, think, and believe, etc. She said that she was tired. So this is here. This suggests that that clause can also be used with the reporting verbs. Okay. After certain adjectives, there are certain adjectives which exist where the that clause is used. Follows adjectives expressing emotions or opinions. Whenever adjective that follows emotions, or you can say that expresses emotions or opinions, there the that clause is always used. I am happy that you came. Happy is a type of emotion. Okay, happy is a type of emotion, so that clause has been used here. Got it? After certain nouns that modifies a noun to provide more information, the fact that he apologized means a lot. So here, whenever during the use of that in a noun, after a noun, it implies that the sentence is providing more information than the before statement, or you can say the previous statement before using that. Okay, got it? Yeah. Now see, punctuations. What does punctuation mean? Let me write the punctuation. Got it? Punctuations. Punctuations. Spelling. I think. Yeah. Okay. So punctuations. Punctuations are the marks, or you can say the marks used for dividing writing into sentences and phrase. Full stop.
comma, semicolon, exclamatory, then you can say hyphen. These all are what? These all are punctuations. ठीक है ना? These all are punctuations that has been used out here. तो punctuations क्या होता है आपको पता है? जैसे आपके आप कभी रोड पे चलते होगे, ठीक है ना? Whenever you drive in a road, whenever you drive on a road, there are road roggers, right? Those road roggers are what? They slow down the speed of the vehicle. Okay, those road roggers slow down the, or you can say stop the vehicles from moving at a faster lane. Similar is the work of the punctuations. What does punctuation do? Punctuation आपको हेल्प करता है, कभी भी आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे तो उसके बीच में स्टॉपेजेस लाने का, परफेक्ट स्टॉपेजेस लाओगे तब आप समझ सकोगे, ठीक है ना? दैट इज व्हाट द punctuations do. For a full stop क्या यूज होता है? Full stop is a basic thing, so I don't think so I need to explain you all. Full stop is used after the sentence ends. Question mark is used when you are asking a question or interrogating. Exclamation mark point is used when you are exclamating or using or expressing your emotions or urgency. Comma is used to separate parts of a sentence, indicating a short pause. She loves pizza. Great, especially with extra cheese. So here there was a short pause, so a comma has been used. Semicolon constitute two independent clauses that are closely related to each other. He loves me not. So these are two, you can say, clauses that are I can say mm, similar to it. Okay, similar to each other, like nearly similar, not completely but nearly. Colon indicate introduces as a list, quote, or explanation. There are two types of choices, yes or no. So here colon has been used. Suppose there are choices given, so you will be using a colon, then yes or no. Got it? Yeah. Dashes used to denote a pause or a break, a throughout, or to introduce a list. She was dash quite frankly dash then amazed. Okay, so this is not that mandatory. Hyphen is not that mandatory. You then also you can see connects compounds words or separates syllables of a word at the end of the line. Suppose that she wore a well-fitted dress to the party. Parenthesis is primarily used to add extra informations or clarification within a sentence. She loves pizza, especially with extra space. This was the end of the statement was this, and for extra information beside the pizza, it has been added that especially with the extra cheese. Brackets is used to explain for include explanatory word or phrases within the quote. ठीक है? He the policeman. Okay. ही किसको रेफर करा जा रहा है? पुलिसमैन को रेफर करा जा रहा है, इसलिए उसको ब्रैकेट पे रख दिया गया था. Got it? Yeah. Apostrophe indicates positions or the omission of letters or numbers. So the policeman arrived. Okay. Quotation mark is used to donate the quote of a individual. Correct. So see, most commonly used to indicate the dialogue writing in the fictions. Hello world, she said. Ellipsis used to indicate an omission or a pause. Okay, so here used to indicate an omission or a pause, and then there is a quite pause, and she left. Slash is used to represent the division, fraction, and options. Bring a notebook, and or a slash has been used for a pen. Got it? Yeah. So see, coming to the final end, here are some parts of speech. In the last lecture, we missed out some parts of speech, and in the comment section, one of them reminded me of that. So I'm discussing it here. Okay, no issues. So parts of speech. What does parts of speech mean? You are well acquainted to the parts of speech that adds taste, or we can say not taste. You can say that it added emotions, or we can say special effects. Okay, special effects. Special effects to a sentence. To a sentence. Got it? Yeah. So what does pun mean? So pun is generally pronounced as pun. Okay, pun. Definition: a pun is a clever figure of speech that plays on words with multiple meanings and sounds. It stands out as one of the most entertaining and intriguing forms of expression. Crafting a great pun requires a sharp mind and a dash of wit, resulting in humor that delights and surprises. I wonder why the baseball was getting bigger. Then it hit me. So here यहाँ पे वो क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे एक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन और एंटरटेनमेंट टाइप का चीज यहाँ इस्तेमाल हो रहा है कि एक बच्चे ने बॉल को हिट करा, ठीक है ना, और जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ खड़ा है, उसकी तरफ बॉल आ रहा है और ये कह रहा है वो कि आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ
क्यों जो बेसबॉल है, जो हिट हुआ है, जो बॉल है, वो मेरे सामने बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, मुझे बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना? एंड देन इट हिट मी, ठीक है? देन इट हिट मी। सो हियर द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्टेटमेंट, here the way of expressing the statement is quite clevery, or you can say witty, or you can say it's like very much engaging or intriguing means कि ये बहुत ही लाइक ऐसा कह सकते हैं कि एंगेजमेंट वाली चीज है कि एक बॉल आ रहा है उसके आंखों के सामने, वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, एंड देन इट हिट, okay, then it hit him. Similarly, a bicycle can't stand on its own because it's too tired, okay, it's too tired. तो यहाँ भी एक हाइपोथेटिकली एक ह्यूमरस वे में रिप्लाई दिया है, ह्यूमर, ठीक है ना? तो या आई एम रीडिंग अ बुक on anti-gravity. It's impossible to put down. I'm reading a book on anti-gravity and it's impossible to put down. So अब यहाँ ह्यूमर क्या इस्तेमाल हो रहा है? If you want to understand, think about it. ठीक है ना? I am reading a book on anti-gravity. ठीक है, वो एक बुक पढ़ रहा है एंटी ग्रेविटी का, ठीक है, एंड वो कह रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल टू पुट इट डाउन, क्योंकि अगर वो चीज वो पकड़ रखा है एंटी ग्रेविटी का बुक, वो एक बुक पढ़ रहा है जिसका नेम है उसका एंटी ग्रेविटी, ठीक है ना? एंड मुझे वो बुक पकड़ के रखा है तो वो नीचे कैसे जाएगा, वो नीचे कैसे गिरेगा जब वो उसने पकड़ के रखा है? तो हियर अ वे ऑफ ह्यूमर हैज बीन यूज्ड। आई एम अ बिग फैन ऑफ व्हाइट बोर्ड्स, दे आर रिमार्केबल, ग्रेट। So here the use of pun has been used. Got it? Yeah. Juxtapositions. What does juxtaposition means? For pronunciation, it is used as juxtaposition. ठीक है ना? This is a type of Germanish words. Okay. So, definition: juxtaposition is the act of placing two or more elements side by side to highlight the contrast or differences. That means opposite sort of statements. It is often used to art, literature, and photography to create a meaningful relationship between the oppositions and the visuals. ठीक है? गॉड गुड एंड इवल इन स्टार वॉर्स, ठीक है ना? गुड एंड इवल जो कि दो ऑपोजिट चीजें हैं, वो एक सिमिलर यूनिवर्स में उसको डाल दिया गया है. सो दिस shows a thing of juxtaposition. Example of juxtaposition. Got it? Juxtaposition. Youth and age in to kill a mockingbird. Youth and age in to kill a mockingbird. ठीक है? Nature and technology in brave new world. Order and chaos in the Hunger Games. Order and chaos are both opposite words. Nature and technology are both the opposite words, and it has been used as to show the use of juxtaposition. Got it? Yeah. So concluding this, all the best for your exams. For quiz 2, this is all that you need to study. Go try to improve your vocabulary. This is the main thing which I would suggest you, because vocabulary is very important, and try to solve comprehensions. ठीक है ना? comprehension solve करो, ठीक है ना? comprehension solve करने से आपका क्या होता है? improvement होता है, ठीक है ना? improvement होता है. किसमें improvement होता है? improvement आपका होता है vocabulary में, ठीक है ना? then reading skills में, ठीक है ना? reading skills में, and also in the you can say the communication part, ठीक है ना? communication part पे focus करो. always try to communicate in English in the groups, ठीक है ना? English in the groups, or whenever you talk to someone, try to communicate in English, because that is very important to you can say to in this degree, not even degree, in any sorts of life, or of your life, or any steps of your life. Talking in English is very important because it is an international language, it is an international communicative language, and that is definitely creates a personality. Learning many languages, including English, Hindi, and whatnot, will improve your personality, and that's it. And concluding this, I would say all the best for your exams. If you have any sort of doubts, comment in the comment section, and yes, all the best again.